Hello everyone, so welcome to Vet It's You YouTube channel. I hope you all are doing absolutely fine. So in this video, we will continue our discussion with the genus Bacillus. So देखो भाई, अब हम लोग बात करेंगे about the clinical signs and the pathology. So simply the incubation period of the anthrax vary from the hours to the days, and in the case of a cattle and the sheep, the disease is usually septicemic and rapidly fatal. देखो, अगर कोई cattle या sheep एंथ्रेक्स से इन्फेक्ट हो जाती है, so the course of the anthrax infection will vary from the hours to the days. ठीक है, and if any cattle or the sheep is infected due to the anthrax, तो वहां पे बहुत जल्दी septicemic conditions develop हो जाएंगी and that will lead to the rapid death of that particular infected animal. ठीक है. The next thing is that although most of the animals are found dead without any premonitory signs, pyrexia with the temperatures up to the 42 degrees Celsius, depression, congested mucosa and the petechiae may be observed in the postmortem. देखो, अगर कोई कैटल या कोई शीप एंथ्रेक्स से इन्फेक्ट हो गई and it will die rapidly due to the development of the septicemic conditions, ठीक है. लेकिन जब भी कोई कैटल या शीप एंथ्रेक्स से इन्फेक्ट होती है, यू विल नॉट फाउंड एनी ऑफ द प्री मॉनिटरी साइंस प्रायर टू द डेथ. ठीक है, द ओनली साइन यू विल ऑब्जर्व इज द इंक्रीज इन द टेम्परेचर्स एंड टेम्परेचर में राइज अप टू द 42 डिग्री सेल्सियस. And when you go for the postmortem of that particular infected animal, you will find the depression, the mucosa will be congested and the pinpoint hemorrhages, that is the petechiae in the carcass of that particular infected animal. ठीक है. The next thing is that the animal which survive for more than one day may abort or display the subcutaneous edema and the dysentery. जो भी एनिमल्स, जो भी कैटल या शीप एंथ्रेक्स से इन्फेक्ट होती हैं, दे सर्वाइव फॉर मोर देन वन डे, उसमें क्या होगा, अबॉर्शन हो जाएगा इफ दे आर प्रेग्नेंट. ठीक है. एंड द सेकंड थिंग इज दैट उसमें सबक्यूटेनियस फ्लूइड एक्यूमुलेशन हो जाएगा एंड आल्सो द डाइसेंट्री में फाउंड इन दोस पर्टिकुलर इन्फेक्टेड एनिमल्स. ठीक है. In the case of a cattle, the postmortem finding include the rapid bloating, incomplete rigor mortis, widespread ecchymitic hemorrhages and edema, dark unclotted blood and the blood stained fluid in the body cavities. देखो, cattle के केस में अगर cattle anthrax से infect होती है and it dies, when we go for the postmortem of that particular infected cattle, तो हमें क्या देखने के लिए मिलेगा, rapid bloating, incomplete rigor mortis, wide hemorrhages, that is ecchymatic hemorrhages, or accumulation of the fluid, that is edema, dark unclotted blood and the blood stained fluid in the body cavities. ठीक है. Next thing is that an extremely large soft spleen is the characteristic of the disease in the cattle. अगर कोई भी cattle anthrax से infect होती है and it dies and we go for the postmortem, so peculiar characteristic जो हमें पता चलेगी, that is the splenomegaly and spleen will become soft. ठीक है. The splenomegaly and the edema are the less prominent postmortem feature in the case of the affected sheep, which are reported to be more susceptible than the cattle and come more rapidly. देखो, अगर anthrax sheep में होता है and that particular sheep dies and we go for the postmortem, तो हमें यहाँ पे उतना prominent splenomegaly देखने के लिए नहीं मिलेगा as we were seen in the case of the cattle. ठीक है. And the one important thing is that in the case of a sheep, if they are infected due to the anthrax, they will die more rapidly comparatively to the cattle. ठीक है. Moving on in the clinical signs and the pathology, in the case of the pigs, the infection result in the edematous swelling of the throat and the head along with the regional lymphadenitis. The intestinal involvement manifests clinically as dysentery due to the multifocal hemorrhagic enteric lesions. In the case of the horse, the clinical course of the anthrax is prolonged for the several days. Following the introductions of the spores into the abrasions, the extensive subcutaneous edema of the thorax, abdomen or the legs may develop. Swelling in the pharynx occur. Also, the colic and the dysentery due to the severe hemorrhagic enteritis may result from the ingestion of the spores. If the septicemia occurs and extensive ecchymiosis and the splenomegaly are found at the postmortem.
सो देखो भाई, अब हम लोग बात करेंगे अबाउट द क्लिनिकल साइंस एंड द पैथोलॉजी ऑफ द एंथ्रेक्स इन्फेक्शन इन द केस ऑफ अ पिग्स एंड द केस ऑफ द हॉर्स. So talking about the pigs, if it is infected, there will be the edematous swelling of the throat and the head region along with the regional lymphadenitis. It will also include the intestinal involvement manifest as a dysentery and it is due to the multifocal hemorrhagic enteric lesions. देखो, अगर मान लो कोई पिग है हमारे पास, वो एंथ्रेक्स से इन्फेक्टेड हो गया, ठीक है, so what will be the clinical signs that you will observed in that particular infected pig? तो सबसे पहले क्या होगा, एडिमेटस स्वेलिंग होगी, कहाँ पे, थ्रॉट में और हेड रीजन में, ठीक है. इसके साथ साथ क्या होगा, वहां पे रीजनल लिम्फ नोड्स जो भी हैं वो भी स्वेलन अप हो जाएंगी, ठीक है. आफ्टर द रीजनल लिम्फाडेंटाइटिस इट विल मूव टुवर्ड द इंटेस्टाइन, और इंटेस्टाइनल इन्वॉल्वमेंट कैसे मैनिफेस्ट होगा क्लिनिकली, एज अ डाइसेंट्री which is due to the multifocal hemorrhagic intestinal lesions, ठीक है. अब बात करते हैं हॉर्स की. तो सिंपली इन द केस ऑफ द हॉर्स, द क्लिनिकल कोर्स ऑफ द एंथ्रेक्स इज प्रोलॉन्ग्ड फॉर द सेवरल डेज following the introduction of the spores into the abrasions. Extensive subcutaneous edema of the thorax, abdomen or legs may develop. The swelling in the pharynx may occur. Also the colic and dysentery due to the severe hemorrhagic enteritis may result from the ingestion of the spores. देखो, अब बात करते हैं हॉर्स की. तो इफ अ हॉर्स इज इन्फेक्टेड ड्यू टू द एंथ्रेक्स और द बैसिलस एंथ्रेसिस स्पोर्स, तो यहाँ पे जो कोर्स ऑफ डिजीज होती है वो थोड़ी लंबी होती है. द ड्यूरेशन ऑफ द डिजीज इज क्वाइट लॉन्ग कंपैरेटिवली, ठीक है. अब हॉर्स में क्या हुआ, सबसे पहले जो भी स्पोर्स थे बैसिलस एंथ्रेसिस के वो एंटर कर गए, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, थोरेक्स में एडिमा बन जाएगा, एब्डोमेन में एडिमा बन जाएगा, एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड, लेग्स में एडिमा डेवलप हो जाएगा, एंड इट विल आल्सो लीड टू द स्वेलिंग इन द फेरिंग्स, ठीक है. अब इंटेस्टाइनल इन्वॉल्वमेंट होगा तो वहां पे कॉलिक लाइक सिम्टम्स दिखेंगे, डाइसेंट्री दिखेगी ड्यू टू द हेमरेजिक इंटेस्टाइनल स्वेलिंग, ठीक है. नाउ इफ द सेप्टिसेमिया अकर्स, द एक्सटेंसिव एक्माइसिस एंड द स्प्लीनोमेलेगी आर फाउंड एट द पोस्टमार्टम. अब मान लो कि किसी हॉर्स को एंथ्रेक्स हुआ एंड इट डाइड आफ्टर सम डेज, ठीक है. अगर इस हॉर्स का हम पोस्टमार्टम करें एंड इफ वी फाउंड द सीवियर सेप्टिसेमिक कंडीशन, तो यहाँ पे हमें क्या देखने के लिए मिलेगा, एक्सटेंसिव एक्माइसिस, दैट इज एक्सटेंसिव बिग और द वाइड हेमरेजेस एंड द स्प्लीनोमेलागी, दैट इज द एनलार्जमेंट ऑफ द स्प्लीन, ठीक है. Now talking about the clinical signs and the pathology in the case of the dogs, which are rarely affected, the course of the disease and the pathological changes resemble those observed in the affected pigs. So देखो भाई, अब हम लोग बात करेंगे about the clinical signs and the pathology of the anthrax infection in the case of a dogs. So simply the dog is a carnivorous animal and it is rarely affected due to the anthrax. And if any dog is affected due to the anthrax, the clinical signs and the pathological changes will resemble the affected pigs, ठीक है. Now coming to the diagnosis for the anthrax infection. So first of all, if the carcass of an animal which have died from the anthrax are bloated, putrefy rapidly and do not exhibit the rigor mortis, the dark unclotted blood from the natural openings will come out. The carcass of such animal should not be opened because this will facilitate the sporulation with the risk of long-term environmental contamination. The peripheral blood from the tail vein of the ruminants or the peritoneal fluid from the pigs should be collected. Thin smear of the blood or the fluid stained with the polychrome methylene blue reveal the chains of the square-ended blue stained rod surrounded by the Pink's capsule. This reaction is known as McFadyen reaction. The amount of the capsular material diminishes with the time after the death of the animal. Next is the isolation. The blood and the MLA inoculated with the suspected sample and incubated aerobically at 37 degrees Celsius for 28 to 48 hours. Next is the identification criteria. The colonial morphology, microscopic appearance in a gram stained smear, absence of the growth on the MLA, cultural features, pathogenicity, tests in the lab animals, PCR based tests to detect the virulence, plasmid, PXO1 and the PXO2. So देखो भाई, अब हम लोग बात करेंगे about the diagnosis of the anthrax infection, कि अगर कोई एनिमल एंथ्रेक्स से इन्फेक्ट होता है तो उसका डायग्नोसिस किस तरीके से किया जाए. So first of all, the carcass of an animal which have died from the anthrax are blotted, putrefy rapidly and do not exhibit the rigor mortis.
डार्क अनक्लॉटेड ब्लड कमिंग फ्रॉम द नेचुरल ओपनिंग्स। देखो मान लो कि कोई कैटल है वो एंथ्रेक्स से इन्फेक्ट हो गई एंड इट डाइज ड्यू टू द एंथ्रेक्स इन्फेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी डेड बॉडी होगी उस कैटल की, तो वहां पे हमें क्या देखने के लिए मिलेगा, ब्लॉटिंग देखने के लिए मिलेगी, बहुत ज्यादा गैस एक्यूमुलेशन होगा, बहुत जल्दी वो बॉडी सड़ने लगेगी एंड इट विल नॉट एक्सिबिट द रिगर मॉर्टिस। देयर विल बी द रिलीज ऑफ द डार्क अनक्लॉटेड ब्लड फ्रॉम द नेचुरल ओपनिंग्स। जो भी डेड बॉडी में नेचुरल ओपनिंग्स है लाइक फॉर एग्जांपल नॉस्ट्रल्स, तो वहां से क्या होगा, अनक्लॉटेड ब्लड रिलीज होगा। The carcass of such animal should not be opened because this will facilitate the sporulation with the risk of long-term environmental contamination. अब ऐसी डेड बॉडी जहां पे ब्लॉटिंग हो, प्यूट्रीफाई हो, it will not exhibit the rigor mortis and there is a release of the unclotted blood from the natural opening. ऐसी डेड बॉडी को हमें कभी भी ओपन नहीं करना चाहिए क्योंकि it is infected with the Bacillus anthracis which will produce the endospores and this will facilitate the sporulation and the release of the spores in the environment will lead to the risk of contamination for a very long duration, ठीक है। Next thing is that peripheral blood from the tail vein of the ruminants or the peritoneal fluid from pigs should be collected. अब देखो, अब हमें कोई डेड बॉडी मिली किसी कैटल की that is being infected with the anthrax, so हमने कैसे पता करा, because they are exhibiting these characteristics. अब हमें पता है कि हम इसकी डेड बॉडी को ओपन नहीं करेंगे बिकॉज इट विल लीड टू द स्पोरुलेशन एंड फर्दर कंटामिनेशन, लेकिन हमें ब्लड तो कलेक्ट करना पड़ेगा बिकॉज वी वांट टू डायग्नोज व्हाट इज द एक्चुअल रीजन और व्हाट इज द एक्चुअल इन्फेक्शन दैट विल लीड टू द डेथ ऑफ दैट पर्टिकुलर एनिमल। तो हम क्या करेंगे, कैटल के केस में पेरिफेरल ब्लड कलेक्ट करेंगे, कहां से, टेल वेन से, और पिग्स के केस में पेरिटोनियल फ्लूइड्स, ठीक है, एंड देन वी विल गो फॉर द एग्जामिनेशन। Then the thin smear of the blood or the fluid stained with the polychrome methylene blue reveal the chains of the square-ended blue stained rod surrounded by the pink capsule. The amount of the capsular material diminishes with the time after the death of the animal. देखो, अब कोई कैटल थी मेरे पास, वो मर गई बिकॉज ऑफ द एंथ्रेक्स। अब मैं इसकी डेड बॉडी तो ओपन नहीं कर सकता, तो मैंने क्या करा, पेरिफेरल ब्लड को कलेक्ट करा, कहां से, टेल वेन से। अब इस टेल वेन से मैंने पेरिफेरल ब्लड कलेक्ट करा, कैटल के केस में, पिग के केस में कहां से करता, पेरिटोनियल फ्लूइड को कलेक्ट करता। इसका मैंने क्या बनाया, स्मीयर बनाया, स्मीयर बनाने के बाद इसको स्ट्रेन करा, किससे, पॉलीक्रोम मिथाइलिन ब्लू स्टेन से, जिसकी वजह से वहां पे मुझे क्या देखने के लिए मिले, इट विल रिवील द ब्लू स्क्वायर एंडेड चेन्स ऑफ द कॉलोनीज ऑफ द बैक्टीरिया, ठीक है, जिसके पास क्या होगी, पिंक कैप्सूल्स होंगी, और ये जो कैप्सूल है इट विल जस्ट डिमिनिशेस आफ्टर द टाइम ऑफ द डेथ ऑफ द एनिमल। जैसे मान लो कोई कैटल है, ठीक है, ये एंथ्रेक्स के कारण मर गया, ठीक है, 5 घंटे हो गए, मैंने इसका पेरिफेरल ब्लड कलेक्ट करा और स्मीयर बनाया, यहाँ पे मुझे पिंक कैप्सूल्स दिखाई दी। अगर यही ब्लड कलेक्शन मैं 10 घंटे बाद करता हूँ, फिर से कैप्सूल्स को देखता, तो वहां पे कैप्सूल मुझे कम दिखाई देंगी कंपैरेटिवली टू द प्रायर केस, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज द आइसोलेशन। ब्लड एंड द MLA inoculated with the suspected sample and incubated aerobically at the 37 degree Celsius for 4 to 48 hours, ठीक है। अब देखो मैं क्या करूंगा, मुझे बैक्टीरिया का आइसोलेशन करना है फ्रॉम दैट पर्टिकुलर डेड बॉडी, तो मैंने ब्लड लिया, उसको क्या करा, MLA पे इनोकुलेट करा और एरोबिकली इंक्यूबेट कर दिया 37 डिग्री सेल्सियस पे फॉर 24 to 48 आवर्स, ठीक है। मैंने क्या कर लिया, आइसोलेट कर लिया बैक्टीरिया को। नेक्स्ट इज द आइडेंटिफिकेशन क्राइटेरिया। तो आइडेंटिफाई कैसे करोगे आप किसी भी बैक्टीरिया को, उसकी कॉलोनीज देख के, तो दैट इज द कॉलोनियल मॉर्फोलॉजी, माइक्रोस्कोपिक अपीयरेंस इन द ग्राम स्टेन्ड स्मीयर, absence of the growth on the MLA, cultural features and the pathogenicity test in the lab animals. You can also go for the PCR test to detect the virulence plasmids PXO1 and PXO2. देखो डायग्नोसिस में सिंपली सबसे पहले मैंने आपको बताया, इफ अ कैटल डाइड ड्यू टू द एंथ्रेक्स, तो वहां पे हमें ब्लॉटिंग दिखेगी, इट विल प्यूट्रीफाई रैपिडली एंड इट विल नॉट एक्सिबिट द रिगर मॉर्टिस, ठीक है। जो भी नेचुरल ओपनिंग्स है वहां से हमें ब्लड निकलता हुआ दिखाई देगा, इससे हम क्या पता कर लेंगे दैट पर्टिकुलर एनिमल डाइड बिकॉज ऑफ द एंथ्रेक्स, और हमें इसकी बॉडी को ओपन नहीं करना है। अब हम बॉडी को ओपन नहीं करेंगे तो हम पता कैसे करेंगे दैट व्हाट इज द एक्चुअल रीजन। तो हमें सबसे पहले ब्लड कलेक्ट करना है। अब ब्लड कलेक्ट कहां से करेंगे, कैटल के केस में पेरिफेरल ब्लड फ्रॉम द टेल वेन और पिग्स के केस में पेरिटोनियल फ्लूइड, ठीक है। उसको कलेक्ट कर लिया, स्मीयर बना लिए, स्मीयर बनाने के बाद हमने देखा, स्टेन करा, स्टेन करने के बाद देखा कि वहां पे स्क्वायर एंडेड चेन्स दिखाई दे रही है और पिंक कॉलोनीज, ठीक है। अब बैक्टीरिया का आइसोलेशन के लिए मैंने क्या करा, ब्लड को
बैक्टीरिया को mla पे मैंने ग्रो कराया और इंक्यूबेट करके 37 डिग्री सेल्सियस पे फॉर 24 टू 48 आवर्स। अब इसके बाद में बैक्टीरिया आ गया मेरे पास, अब इसको आइडेंटिफाई कैसे करूंगा? विद द हेल्प ऑफ कॉलोनीज, माइक्रोस्कोपिक अपीयरेंस, absence of growth on the MLAs, or you can go for the molecular techniques like PCR that will help you to detect the virulence plasmid, that is PXO1 and the PXO2. After looking at this, you will be confirmed or the sure about the actual causative agent of that particular disease. Moving on, in the diagnosis for the anthrax infection, we can perform the Scully test, which is a thermoprecipitation test designed to detect the antigens of the Bacillus anthracis in the biological materials such as hides. Homogenized material is boiled and clarified by the filtration. The filtrate is used as a source of antigen. In the ring precipitation or the gel diffusion test with the Bacillus anthracis antiserum, the test lacks the specificity because the Bacillus anthracis shares the thermostable antigens with other Bacillus species. The agar gel immunodiffusion completent fixation test, ELISA, and the immunofluorescence test can also be used for the diagnosis, and molecular diagnostic methods are also used like PCR. So देखो भाई, अब हमें क्या करना है? स्कॉली टेस्ट परफॉर्म करना है फॉर द डिटेक्शन ऑफ द एंथ्रेक्स इन अ पर्टिकुलर इन्फेक्टेड एनिमल। ठीक है, तो बात करते हैं स्कॉली टेस्ट की। सो इट इज अ थर्मोप्रेसिपिटेशन टेस्ट डिजाइन टू डिटेक्ट द एंटीजेंस ऑफ द बैसिलस एंथ्रेसिस इन अ बायोलॉजिकल मटेरियल्स सच एज हाइड्स। देखो, स्कॉली टेस्ट क्या है? थर्मोप्रेसिपिटेशन टेस्ट है जिसमें हम बैसिलस एंथ्रेसिस के एंटीजेंस को डिटेक्ट करते हैं। कहाँ पे? in the biological materials such as skins, hides, etc. ठीक है, simply in this test the homogenized material is boiled and clarified by the filtration. The filtrate is used as a source of antigen in the ring precipitation or the gel diffusion test with the Bacillus anthracis antiserum. The test lacks the specificity because the Bacillus anthracis shares the thermostable antigen with the other Bacillus species. देखो, अब एस्कॉली टेस्ट हमें परफॉर्म करना है तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले कोई होमोजेनाइज मटेरियल लेंगे उस इन्फेक्टेड एनिमल बॉडी से, उसको बॉईल करेंगे, उसको फिल्टर करेंगे। जो भी फिल्ट्रेट हमारे पास आएगा दैट विल बी एक्ट एज द सोर्स ऑफ एंटीजन। उसके बाद हम क्या करेंगे? जेल डिफ्यूजन टेस्ट या द रिंग प्रेसिपिटेशन टेस्ट परफॉर्म करेंगे विद द हेल्प ऑफ अ बैसिलस एंथ्रेसिस एंटीसीरम। ठीक है, देन इट विल टेल अस लाइक वेदर इट इज बैसिलस एंथ्रेसिस और सम अदर इन्फेक्शन। इस टेस्ट की एक नेगेटिव पॉइंट ये है, बेसिकली इस टेस्ट से हमें स्पेसिफिसिटी नहीं पता चलती कि वेदर इट इज पर्टिकुलरली अ बैसिलस एंथ्रेसिस इन्फेक्शन और सम अदर स्पीशीज ऑफ द जीनस बैसिलस, क्योंकि जो बैसिलस एंथ्रेसिस के एंटीजेंस होते हैं दैट विल शेयर द सेम थर्मोस्टेबल कैपेसिटी एज अदर बैसिलस स्पीशीज एंटीजेंस। ठीक है, नेक्स्ट डायग्नोसिस टेक्निक फॉर द एंथ्रेक्स इन्फेक्शन कैन बी द agar gel immunodiffusion test, complement fixation test, ELISA, or immunofluorescence test. You can also go for the molecular diagnosis like PCR for detecting the plasmid virulence factor like PXO1, PXO2 for the diagnosis of the anthrax infected animal. Now coming to the treatment, administration of the high doses of the penicillin G or the oxytetracycline may prove effective in the early course of the disease in the anthrax infected animals. So देखो भाई, अगर हम ट्रीटमेंट की अगर मैं बात करूं तो सिंपली इफ अ एनिमल इज सब्जेक्टेड और इन्फेक्टेड विद द एंथ्रेक्स ड्यू टू द बैसिलस एंथ्रेसिस स्पोर्स, तो आप लोग क्या करोगे? सबसे पहले उसमें पेनिसिलिन जी और ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन की हाई डोसेस का एडमिनिस्ट्रेशन, एंड इफ इट इज एन अर्ली कोर्स ऑफ द इन्फेक्शन तो वो एनिमल सही भी हो सकता है। ठीक है, नाउ कमिंग टू द कंट्रोल ऑफ द डिजीज. So first of all, we will discuss about the control of the disease in the endemic region. So first of all, the annual vaccination, particularly of the cattle and the sheep, is advisable with the Sterling strain spore vaccine. The vaccine should be given about 1 month before the anticipated outbreaks. The spores in the live vaccine convert to non-encapsulated avirulent vegetative organisms. Next is the chemoprophylaxis. Employing long-acting penicillin should be considered when outbreak threaten valuable livestock.
A killed vaccine is available for the humans who may be exposed to the infection in the course of their work. So that's all for this video. I hope you like it. So please like, share, comment and subscribe to my channel Vet It's You. Thanks for the watching, an initiative by Ankit Kaushik.